हर स्क्रिप्ट का अपना एक सफ़र होता है, तो चलिए ऐसे ही एक सफ़र पे जिसका नाम है स्क्रिप्टनामा। वेलकम टू स्क्रिप्टनामा सीजन 2, एक ऐसा पॉडकास्ट जो कहाणी के पीछे की कहाणी सुनाता है। तर मग कसे आहात सगळे? आय होप तुम्ही आमचा पॉडकास्ट एन्जॉय करत असाल. तर मग आजचा आपला एपिसोड पॅरेंटिंगवर असणार आहे. नाही, आम्ही रायटिंगवरून पॅरेंटिंगवर शिफ्ट नाही होत आहोत, पण आजचा आपला एपिसोड स्क्रिप्ट रायटर्ससोबत पेट पॅरेंट्ससाठीही खास असणार आहे. कारण आज आपल्यासोबत जे गेस्ट आहेत ते आहे पेट पुराण सिरीजचे लेखक आणि क्रिएटर आणि 2 गोंडस पेट्सचे पॅरेंट ज्ञानेश झोटिंग सर. सर, तुमचं स्क्रिप्टनामा पॉडकास्टमध्ये मनापासून स्वागत. कसे आहात तुम्ही आणि काय वाचत आहात सध्या आणि काय बघत आहात ते आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. हॅलो. एकतर सगळ्यात आधी थँक्यू या उपक्रमासाठी. दिस थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू प्रोव्हाइड अ प्लॅटफॉर्म टू रायटर्स टू टॉक द स्टोरी which lies behind the story or beneath the story they write. Right. Because writers rarely get to speak. Yeah, true. Beyond scripts. So this is a wonderful initiative you have started. So मी काय वाचतो आहे आता. सो जीव द्यावा की चहा घ्यावा नावाचं अप्रतिम एक दामोदर मावजो म्हणून कोंकणी लेखक आहेत. त्या कादंबरीला इफ आय एम नॉट रॉंग आत्ता बहुतेक साहित्य अकादमी मिळालं. सो त्या दामोदर मावजोंच्या त्या पुस्तकाचं जे मुळात कोंकणी पुस्तक आहे, इट हॅज बीन ट्रान्सलेटेड इन टू मराठी. सो आय एम रिडिंग द मराठी व्हर्जन. आय रिग्रेट दॅट आय एम नॉट व्हेरी वेल वर्स्ड विथ कोंकणी, तर मला कोंकणीमध्ये वाचायला आवडलं. पण इट्स अ व्हेरी ब्युटिफुल बुक. आय वोंट टेल यू द डिटेल्स. यू मस्ट जस्ट गो अँड रीड. व्हेरी सिम्पल अँड व्हेरी डीप, व्हेरी ब्युटिफुल. तर ते पुस्तक मी सध्या वाचतो आहे. आमचे मित्र आहेत ऋषिकेश गुप्ते. इज व्हेरी वेल नोन मराठी ऑथर हू राईट्स ॲक्च्युली इन अ स्पेस ऑफ डार्क कंटेंट, मोस्टली डीलिंग विथ लाईक हिज जॉनर इज हॉरर. ॲक्च्युली इट्स नॉट अ घोस्टली हॉरर. दंशकाल नाव आहे त्या पुस्तकाचं. इट्स अ वंडरफुल तुंबाड मला जोन. येस. सो बेसिकली आय लाईक द थिंग दॅट लाईक मराठी हॅज व्हेरी नुआन्स्ड वर्ड्स. सो हॉररसाठी मराठीमध्ये भय कथा असा शब्द आहे आणि गूढ. सो बेसिकली ही गूढ कथा आहेत. आता गूढ इज नॉट हॉरर नेसेसरीली. इट कॅन बी बट लाईक नॉट नेसेसरी. सो दिस इज गूढ कथा आणि गूढ कादंबरी आहे ती दंशकाल म्हणून. ती मी तुम्हाला सगळ्यांनाच रिकमेंड करेल. इट्स आउटस्टँडिंग, व्हेरी मच रूटेड. एक मराठी जॉईंट फॅमिली, कोकणात राहणाऱ्या त्या फॅमिलीच्या ऱ्हासाबद्दलची कथा आहे. द डिक्लाइन ऑफ द फॅमिली. इट हॅज व्हेरी नुआन्स्ड psychological analysis to it actually, but the genre is horror, but I'll not say like it's not like horror. It's very interesting. It deals with all these deeply psychological and dark elements within the people of the family, but very beautiful, like very original and very. ते एक वाचतोय म्हणजे he's my very good friend. I love him a lot. ऋषिकेश गुप्ते. I would recommend all of his books actually to read. So this is what I'm reading right now. And watching, actually, I'm not a binge watcher. Actually, I must say this when I create a content for people to watch on binge. But but like I cannot consume a lot of content on screen, very frankly. हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में बहुत सारा कंटेंट देखते हैं, बट एज अ राइटर हु वांट्स टू राइट इन मराठी, व्हाट शुड बी माय फर्स्ट क्राइटेरिया टू इवैल्यूएट my story ideas? So first thing, I think it depends from person to person, and there will be never a standard thumb rule to that. Right. And it has to be that way. Right. For every writer or for every individual. Right. My teachers taught me writing. My guru Satish Alekar, who's a playwright, or Mr. Samar Nakhate, who has taught me writing for films, or I was part of Sundance Screenwriters Lab. What was the most common thing which all these schools of mine taught me is like the connection, the very important embedded connection you have with your story. Mm-hmm. Story is not something out of your body. Right. It's part of your body and existence. It's like
yeah, it's like an organ. Like I cannot separate my hands or eyes. So that is the way the story should be attached to the writer. And if it is attached in that manner, then it develops very well. Of course, you will have to take efforts. Of course, writing is very demanding process. It needs lot of effort. जो लिखता है उसको वो पता है. It's a thing that you need to be very truthful and genuine with the process, and you just need to treat your story as an individual person. Like the story will converse with you. Right. Don't treat as a story as an object or just a matter. Like treat it as a person. Treat it like your friend, your own story. Make a dialogue. Don't try to like जैसे मैं राइटर हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैंने ये कहानी लिखी है. I don't own the story, frankly. Story, हम जैसे story को ही बोलते हैं कि we tell story germ. We use the words कि germ अच्छा है. So we have already defined story as a living being in that context. Like it will come by itself. The writer is an enabler. That's it. Writer is not someone who gives birth to the story. That's what I believe. I think the story demands life for itself. It will make you restless unless and until it doesn't get on paper. The time it get on paper, you will feel relieved. मतलब आप लिखते भी नहीं हो ना तो वो बोलते हैं ना कि मन में बात नहीं रहती. वैसा ही है कि अगर बोलनी है ना तो बात आनी ही है बाहर. तो वो जो रिलेशन है, एक तो मैं इससे हाउ इज द माई लाइफ और माई एग्जिस्टेंस इज एम्बेडेड विद माई स्टोरी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आप कोई भी फॉर्मेट के लिए लिख लो, वो भी है सबसे पहले एट द बेस ऑफ इट. इफ यू आर नॉट, इफ इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर बीइंग स्टोरी, देन इट्स अ ट्रांजैक्शनरी रिलेशन. फिर वो मजा नहीं है, मतलब उसमें इट्स अ ट्रांजैक्शन. मतलब इट्स फिर पेपर में आप कुछ भी लिख लो, बिकॉज ऑन पेपर यू आर राइटिंग, बट इट्स अबाउट सम रियल पीपल. Of course, ना कहीं से तो इंस्पायर हुआ. It might be about yourself. It might be about someone you know very closely. It might be someone who स्टोरी का इंस्पिरेशन कहाँ से आता है, जिंदगी से ही आता है ना. Right, true. और हम एक इकोसिस्टम ही तैयार करते हैं, राइटर्स बनाते हैं कि जिसमें ये जिंदगी कहानी में चेंज कर ले. So it's all about the real people. So the characters matter actually. Many times again we treat characters as like characters in the story. We don't treat them like real persons. Like they should like again जैसे कहानी आपके साथ बात करती है, कहानी बोलती है कि मैं इस दिशा जाऊंगी, मैं उस दिशा जाऊंगी, पता नहीं होता है कहानी कहाँ खत्म होगी. तो वो इट्स अ जर्नी. अगेन सेम जर्नी इज विद लाइक विद द कैरेक्टर्स. You need to, initially they come on paper holding your hand. That's it. After they have arrived on paper, then you need to hold hand of your characters and your story, and they'll lead. You will have to follow. खूपच छान पॉइंट सांगितलं तुम्ही आम्हाला हे. And don't think of the pages and the format and like don't know like इसका सीरीज बनेगा, फिल्म बनेगा, नहीं इसका सीरीज ही. आप क्या कर रहे हो आप? मतलब ये कैसे है ना, लेखक एक माता पिता है, हाँ, मतलब तो उनको बच्चा हुआ भी नहीं और उन्होंने प्लान कर दिया कि इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा. अच्छा नहीं, आजकल तो ना सब इंजीनियर बन रहे हैं. जैसे इंजीनियरिंग में पैसा है, वेब सीरीज में पैसा है, तो चलो इसको वेब सीरीज ही बनाते हैं. ये आप आपके बच्चे के साथ जो करते हो, ये आपके कहानी के साथ नहीं करना है. मतलब उसको आने तो दो, इस दुनिया में बढ़ने तो दो, एंड देन ही विल डिसाइड फॉर हिमसेल्फ और शी विल डिसाइड फॉर हिमसेल्फ. जैसे तो दैट वे द स्टोरी विल डिसाइड फॉर हरसेल्फ. आपके लिए पेट पुराण का आइडिया था या एक ब्रीफ था सोनी लिव ने आपको दिया था, या आपके पास कहानी थी? सो सोनी लिव ब्रीफ तो नहीं था बेसिकली. हम सो बेसिकली पेट पुराण इज सोनी लिव्स फर्स्ट मराठी ओरिजिनल, so which they have like originally developed from script to screen. So at that time I used to go and meet, and they were planning to start a Marathi section, vertical, yeah. And so we used to meet and discuss ideas कि क्या हो, ये है वो, like many things. So they said that we want something which is very in a way very simple and in a way slice of life. This was the thing. And then I told like
this is the story I have, and I had this story. So you had a story of yeah, Pet story. Puraan. Matlab, it was not like very concrete, but I always felt, because I am a pet parent with my partner, my wife, and that was, we went through all that process, which is already there in Pet Puraan. That is the process which I have lived through. Yeah. Like I can name you all the equivalent. From personal the first pet I got, Simba, he's an adult cat, not a dog by the way, but but he's an adult. No one was ready to adopt him. जहाँ से अडॉप्ट किया वही एक एनजीओ थी, वहाँ पे भी एक डिसूजा जी थी, जो वो पराग क्या कैरेक्टर है, तो वो हमारा तेजस नाम का दोस्त था. तो उसकी बिल्ली प्रेग्नेंट थी, तो मैंने और मेरी बीवी ने फोस्टर किया था. तब मेरी बीवी बिल्लियों से इतना डरती थी और भाग जाती थी, मतलब पैर ऊपर हाथ ऊपर, एकदम खतरनाक. Just like Atul in our series. Exactly, that's like Atul in our series. That was my wife. So and I was like very comfortable, like हाँ बिल्ली तो है, ऐसा तो है, क्योंकि I had a pet for like I've grown up with a dog. टीपू उसका नाम था. इट्स अ नॉर्मल इंडियन डॉग, नॉट एनी काइंड ऑफ स्पेशल ब्रीड. तो मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तब उसे लाया था. तो तब से टिल माई ग्रेजुएशन ही वॉज देयर, एंड ऑफ कोर्स ही एज्ड एंड एक्सपायर्ड. In that way, I was used to pets, and I was also used to this concept of pet parenting. Like, it's not like a really very new concept, frankly, I'll tell you. माझी आई असं म्हणायची की मला 3 मुलं आहेत, म्हणजे एक ज्ञानेश, एक पुष्कर आणि एक टिपू असं. आणि आम्हाला माहिती आहे की आम्ही एकमेकांसोबत सिबलिंग्स सारखं वागायचो. म्हणजे आम्हाला असं माहिती झालं, अरे आज आईचा मूड ठीक नाहीये, मग आपण जसं आज करतो थोडं आवरावरी करतो थोडं. तो टिपू पण एकदम छान एकदम वागायचा, काही त्रास नाही द्यायचा, असं सगळं. मग आधी मग कधी आज मस्ती करायची, मग आम्ही तिघही मस्ती करायचो काही पण. म्हणजे तो आमच्या पायात घुसून मग आम्हाला पाडायचा. मग संडे त्याला माहिती असायचं की संडेला तो माझ्या अंगावर यायचा बेडवरती आणि उठ म्हणायचा, उठ आज खेळायचा दिवस आहे. आता हे जे एक हे असतं, सो आय हॅव ग्रोन अप इन दॅट. So I didn't never feel that pet parenting is something else. And for me, yeah, of course, that was a thing ki not having the decision of not having a child, considering your pet almost like your child. So that is of course a new thing, and but which is again not rare. इनिशियली लाइक जब मुझे ये सोनी लिव में पिच किया तो मैंने, तो उन्होंने कहा कि यार ये बहुत निश टॉपिक नहीं है. तो मुझे लगा कि अबे हाँ निश है, पर मेरे इर्द गिर्द इतने पेट पेरेंट है. और फिर मैंने जनरल थोड़ा सा रिसर्च किया. सो इन इंडिया और इन ग्लोबली द मिलेनियल ट्रेंड है, ट्रेंड नो, इट्स अ मिलेनियल लाइफ स्टाइल, और लॉट ऑफ मिलेनियल्स आर चूजिंग टू बी पेट पेरेंट. इट विल बी रिलेटेबल टू ऑल पेट पेरेंट्स. और मेरे लिए ना, मुझे पेट पुराण जब मैंने लिखा था तो मैंने ये एक बात बोली थी कि मैं ये पेट पेरेंट्स खाली पेट पेरेंट्स के लिए नहीं बना रहा हूँ. मैं ये उन लोगों को के लिए बना रहा हूँ कि जो अचंभे में जाते हैं कि यार ये क्या बात है, ये पेट पेरेंट क्या चक्कर है, राइट, और ये क्या अजीब लोग हैं, ये कैसे, मतलब ऐसा इतना, मतलब कुत्ते को कुत्ता मत बुलाओ, बिल्ली को बिल्ली मत बुलाओ, इनको नाम से बुलाओ. या सो व्हाट इज दिस वर्ड, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी. तो मुझे लगा कि आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट टू देम इन अ वेरी हम्बल मैनर कि व्हाट इज दिस वर्ल्ड, एंड इनवाइट देम. So yeah, that was the thing, and which thankfully SonyLiv was very open to all my ideas, and they gave me very good freedom to do things. That is very important. Again, like वो होता है ना कि trust the writer and Creator. leave it. Yeah. तो that is a very important thing. They trusted me. Initially उन्होंने काफी मतलब डिस्कशन हुआ हमारा कि ये निश होगा क्या, ये होगा, but they just understood like it is very much coming from his world, and he is very much convinced about it. And also I was the showrunner myself, मैं director myself, so मैं वो दोनों पार्ट करता हूँ. एक बार मेरा राइटर एकदम इमोशनली जब अटैच होता है कहानी को, तो मैं प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए डायरेक्टर स्टेप अहेड होता हूँ. और इसीलिए मैंने ये सब मार्केट रिसर्च वगैरह करके रखा था. मैंने उनको बोला, देखो पेट इंडस्ट्री का इतना टर्नओवर है, इतना ट्रेंड है मिलेनियल्स का, अल्टीमेटली द ओटीटी ऑडियंस इज अ मिलेनियल ऑडियंस. मिलेनियल्स के ऊपर तो सब टीवी देखते हैं. सो या दिस इज द कंटेंट वर्थ मेकिंग. सो and then they agreed and trusted me, and that was a wonderful process of developing. What is your process to write a fictional story which is not based out of your personal experiences? If it is not based
out of your personal experiences. I think if it is not directly based on your life, but still it will have you, yourself, the world around you there. First, we need to understand that. Again, even if my first feature film was a fantasy. It is a dark fantasy genre. The film's name is Raakshas. It's out there on Z5. So it's a very different genre. The germ and the germ originated in me out of my memories of childhood. But the way the film fleshes out, so it is not just it is not about my childhood memories. Actually, it is lot beyond that. But the germ started with that. But in that context, still you need to find what is the resonance of the story within you. And or for that matter, like if you say that I'm working on something which is now not at all part of my life, it is some based on some historical incidents. So again, I need to see myself there. Like, okay, that is very important. So as a writer, you mean that you need to have a connection with... Very deep connection. Like you need to have a very deep connection. Unless and until then it will be a transaction. That's the most painful thing actually. To have a transactionary relationship. With your story. With your story. Transactionary. Just a transactionary relationship, and just you chop it and slice it into like... scenes, sequences, yeah, exactly. And episodes. That can't be. Like I seriously believe that always works. आप बाहर वाली दूसरी की कहानी, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐतिहासिक कहानी अभी मैं लिख रहा हूँ, एक्चुअली लिख रहा हूँ, तो बेसिकली तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि अगेन द प्रोटोगोनिस्ट, द वर्ल्ड, व्हाट इज इट, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्ल्ड इट इज. Fear, I try to understand. So basically, it's a story. I'll not reveal the story because it's into development, but it's a story of a young adult who's like just 21, 22-year-old, and he is feeling something that he should do something for the nation. And so मैंने सोचा कि यार ये जो ये उम्र है, इसमें क्या है? ये जो ये 16 से 21, आप दुनिया भर के रिवॉल्यूशनरी देख लो, सब यही उम्र के है. भगत सिंह, और ये हमारे अंदर भी जब ये एनर्जी आती है कि आई वांट टू चेंज द सिस्टम, ये उसी उम्र में आती है. तो व्हाट इज दिस एंड व्हाट वाज इट इन मी, देन व्हाट आई दैट टाइम. सो देन आई पेन डाउन ऑल दोज थिंग्स कि क्या क्या क्यों लगा, क्या लगा, क्या मैंने क्या किया इसमें, फिर किसने क्या किया, फिर दोस्तों के साथ बात की कि यार ये उम्र में तुम क्या करते थे, ये ऐसा है, ये व्हाटएवर, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बैक देन. फिर मतलब लाइक फिर किसी ने कुछ सोशल वर्क किया है, कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चला गया है, कोई नदी साफ करने प्लास्टिक जमा, मतलब दैट वाज द प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग चेंज ना. कोई बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट में जाके रिबेल किया है सिस्टम के साथ, मतलब इन दैट एज लाइक स्टूडेंट और इन द रिवोल्यूशनरीज ऑल. सो आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थिंग अराउंड दैट एज एंड व्हाट इज द प्रोसेस. सो दिस यू नीड टू डू अ लॉट बिफोर हॉपिंग और जंपिंग टू लाइक ओके मैं अभी लिखना शुरू करता हूँ. अ लॉट, मतलब वो हेल्प ही करेगा, मतलब कहानी एक अच्छी कहानी बनने में वो हेल्प ही करेगा. हां, पण जसं तुम्ही म्हटलात की यू नीड टू डू अ लॉट, पण मग तो रिसर्च करण्यासाठी ॲक्च्युली म्हणजे तो रिसर्च कसा करायचा त्या कॅरेक्टरसाठी किंवा स्टोरीसाठी? हे बघ, रिसर्च रिसर्च काय आहे बेसिकली, डेटा गॅदर करणं, फॅक्च्युअल डेटा. ओके, एक तो म्हणजे रिसर्चला पण ना, मी आता तुझी म्हणजे मी प्रोसेस सांगतो. जर तुम्हाला असं असेल की आपली गोष्ट नाही सांगत येत आपण, आणि आपण जसं मी तुला म्हणालो की काय आता एक इन्सिडन्स घडलाय सपोज कुठेतरी दुसऱ्या एका गावी, आणि तो इन्सिडन्स पेपरमध्ये लिहून आला, आणि मला असं वाटलं की अरे काय मस्त फिल्म होऊ शकते याच्यावरती, आणि किंवा काय मस्त काहीतरी आहे यार, मला काहीतरी वाटतंय याच्याबद्दल. सो त्याच्यानंतर रिसर्च कसा करतो आपण? पहिली गोष्ट ना, आय विल गो देअर,
किसने ये आर्टिकल लिखा है, मैं उसको ढूंढूंगा, उसके बाद मैं, या फिर किसके बारे में लिखा है, मैं वहां जाऊंगा, आई गो देयर, मीट, टॉक दैट पर्सन, अंडरस्टैंड दैट पर्सन. अभी वाइल टॉकिंग, what is the data the writer seeks? Writer doesn't seek data as a data. Like we need data also. मतलब वो तो factual data लगेगा कि अगर मैं समझ लो कि कोई एक गांव में औरत है, उसकी एक सक्सेस स्टोरी है कि उसने मतलब at the age of 80 एंटरप्रेन्योरशिप में उसने कुछ रेडिकल रिवॉल्यूशन लाया. एक फिक्शनल पकड़ लो कि उसने एक छोटा सा बिजनेस चालू किया. मान लो जैसे उसने एक अपना इंस्टाग्राम वाला ये शुरू किया. अभी रिसेंटली एक आजी है, त्यांना फॉलो करतो. सो शी पुट्स द कुकिंग वीडियोज ऑन रील्स एंड शी इज वेरी फेमस. सो एट द एज ऑफ 80, सो दैट इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो अगर उसकी कहानी मुझे बोलनी है तो फैक्चुअल में क्या क्या डेटा लूंगा, उनकी उम्र क्या है, शादी कब हुई थी, ये तो सब फैक्चुअल डेटा है. मतलब बेसिकली उम्र क्या है, हाइट वगैरह वगैरह, ये फैक्चुअल डेटा हो जाने के बाद आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हर जर्नी. बट उसके बाद और रिसर्च क्या करोगे? द रिसर्च, आई थिंक द फैक्चुअल डेटा तो मिलने ही वाला है. इन्फॉर्मेशन के लिए हम कहानी नहीं बोलते. मतलब स्पेशली इन द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन वी शुड अंडरस्टैंड दैट स्टोरी, एंड ऑलवेज हिस्टोरिकली स्टोरी हैज नॉट बीन just the device of conveying the information. Yes, we have to convey information, like because information एक बहुत important element है skeleton structure के story का. बट खाली skeleton structure ले दो किसी को तो वो पसंद नहीं करेगा. उसके ऊपर आपको you need to have the develop it. You need to develop a muscle structure, the bone structure. You need to develop the veins, then you need to design it completely. You need to design the face, the eyes, the ears, the upper part of the body, the lower part of the body, and treat it like as every individual looks different and is beautiful in different way. Same way, every story you need to beautify it and you need to develop it. Beautify in not terms of like beautification, I'm talking in terms of nurturing, in terms of developing it. So that is the research. नाही तर काय होतं की लोक काय करतात की जातात, हां मग मला सांग की तू आपण एक एक्सपेरिमेंट करून बघितला की 10 जणांना स्टोरी लिहायची आणि 10 जणांना सांगितलं की हे बघ ह्या गावी या बाई आहेत आणि ते आता ना वयाच्या 80व्या वर्षी युट्यूबवर झालेले आहेत, त्यांची स्टोरी. 10 जण 10 वेगळ्या पद्धतीने स्टोरी लिहू शकतात आणि तुला 10ही गोष्टी आवडतील. हे कशामुळे होतं? कारण every writer will understand that life of that old woman from their own perspective. It will be their perception of life, their own. Writer's perception of life is going to reflect in the story. And some stories might just get generic. क्योंकि मतलब इसीलिए तो मतलब जैसे है कि मैकबेथ बार बार क्यों बन सकता है? शेक्सपियर की एक बार बन गया खत्म हो गया ना. मतलब बार क्यों बन रहा है शेक्सपियर की? मतलब बाहर भी इतने बने, फिर इंडिया में भी इतने बने, फिर मतलब वॉट एवर द वर्जन्स. सो ये कैसे बन सकता है? एक ही कहानी बार क्यों? मतलब हमारे सर है राजू नाइक, वो तो कहते थे कि मतलब रामायण महाभारत, बेसिकली महाभारत कहानियां आ गई है. तो फिर भी बार हम आज भी कुछ एलिमेंट उठा ले महाभारत से, मतलब कोई भी कि एक चैप्टर उठा ले और उसके ऊपर फिल्म बनाए, तो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम एवरी पर्सन विल मेक इट डिफरेंट. So what is that? We need to understand that. And then it is again the very deeply personal connection of the writer and the story matter. Again, if you don't like, if you just treat it as a material, that is like better not write it then. So then how do you approach writing characters, creating characters, A, for films and B, for a series? Because for series, it's mostly character driven, right? Family Man is about their family man who is also into... Yeah, long formats are mostly character driven. Yeah. So how do you create such characters? What you have to keep in mind, basically? So again, see, there is a lot of craft to that, of course. But like again, now the characters, seeing them as a human beings. और ना ये आप ना मतलब वो है कि उसमें डिफरेंशिएट मत करो आपके ही मन में कि ये मेरा प्रोटोगोनिस्ट है तो ये सेकंड सब प्लॉट में ही है, ये फ्रेंड ऑफ ए हीरो ही है, ये मेरा एंटागोनिस्ट है. मतलब स्टोरी एलिमेंट्स के लिए वो फोर्स रहेगा,
but give them whole body, give them their life, think that what these characters do beyond your story, develop it like a ecosystem, like a complete ecosystem. कि what do they do? ये सीन खत्म हो गया, जैसे मैं प्रोटोगोनिस्ट हूँ, चलो ये कहानी का मैं प्रोटोगोनिस्ट हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी कहानी तो मेरे साथ आगे बढ़ेगी, मेरा दोस्त आ गया है यहाँ पे तो हम आगे जाएंगे कहीं, पर ये बढ़ गई आगे कहानी, पर मुझे फिर पता चाहिए कि ये जो इंटरव्यू लेने वाले 2 बंदे है उनकी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, उनके पीछे क्या कहानी थी. तो फिर ये जो सीन अभी हो रहा है वो सीन इतना ट्रूथफुल होगा. So any great stories what we like, even a glimpse of the character for an audience give us a feel of the whole. Even a small character, we feel that he's a whole person. True. It's not just like a 2-dimensional person. Like each and every character should have a backstory. We should work on that. Like we should just treat them as an ecosystem, and they are people who are talking with each other, interacting with each other, and we should understand them as a force of of the individual personalities. वो अगर हम समझ लें तो ना, they will react to each other. They need to react to each other. Right. In a situation. I'm not going to tell them. I can't tell them, very frankly. I can put them in a situation as a writer, but I cannot ask them what to say. They'll say and react with each other as per their personality, as per their philosophy, their worldview, whatever. So, and I think this is not just for like film or series, any kind of writing, literature भी ले लो, नाटक भी ले लो, तो ये काफी important है. The characters need to interact with each other, and for that you need to develop character as a whole body and as a person of a body, soul and mind. Right. एक कैरेक्टर अगेन वही है जो कहानी के साथ नहीं करना है, वो कैरेक्टर के साथ भी नहीं करना है. ट्रीट कैरेक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग. ट्रीट एंड बेसिकली कैरेक्टर आता कहाँ से? अगेन आपके रियल लाइफ पर्सन लाइफ से ही आपने कहीं से इंस्पायर होके, यार कैरेक्टर से हवा से तो नहीं आ रहे हैं, आपकी जिंदगी में ही आपने जिन लोगों से इंटरेक्ट किया है, जिन लोगों से, वहीं से कहीं से आते हैं ना ये कैरेक्टर. सो देयर इज ऑलवेज अ रियल लाइफ कनेक्शन टू दैट. या so just we are just creating the ecosystem on paper. So that should be come with a mind, soul, body and flesh. The character should have that characterization. Baki then they'll interact. Then they'll react and interact. We have to just put them in that situation. Then they'll do it for themselves. Okay. So say we have a story, we have created characters. At what point you decide to jump on the script, like writing the scripts? What is your procedure before you jump to the scripting of your story? So scripting stage मेरा ऐसा होता है कि कोई आइडिया मन में आ गया तो मैं तो पहले लिखता भी नहीं हूँ, फ्रैंकली. क्योंकि क्या है ना, मन में तो हमेशा विचार आते ही रहते हैं ना कि मतलब दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो गुड. बट इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई कीप इट हैंगिंग. And I have my own object to do that. How long? I don't know. Unless and until the story makes me demands me, get me on paper. Until that, it's not a standard process. Nothing is standard. Like okay, there is no, like कभी होता है कि it hits you so deep and you immediately write it down. कभी ऐसा होता है कि it's there and I'm still lingering on thought and it's getting cooked in my marination mind. हो रहा है. Exactly, it's getting cooked and one day like it's like yes, click and you write it. Click is like what the energy, the force, the driving force of the story कि वो बोलती कि भाई अभी मुझे लिखना ही पड़ेगा तुझे, बस मतलब अभी you have to give me birth. Right. So that is the urge of the story and that depends. वो हो गया तो उसके बाद then I just then keep on writing. I don't limitize it. अच्छा. लाइक फिर रोको, एक बार मतलब पेन रख दिया ना पन्ने पे तो मतलब छोड़ो, फिर गाड़ी भागने दो. मतलब जैसे नदी बहने दो, मतलब वो बहने दो, जितना बहना है बहने दो, अभी कोई बांध मत डालो उसे, फिर वो सब आएगा. वॉट एवर द ओरिजिनल थॉट प्रोसेस इट इज वेरी रॉ. यू नेवर नो कि ये जहाँ कहाँ पे जाके खत्म होगी, क्या होगी, इससे क्या होने वाला, ये कैरेक्टर कौन है, अरे बाप रे मुझे तो लगा था ये प्रोटोगोनिस्ट है, तभी ये मेरा वर्क नहीं है प्रोटोगोनिस्ट. आपको ये खूब छोड़ दो उसको. और ये जितना ही आप लिखोगे, जितना भी रैंडम रहेगा,
ये मटेरियल आपको काफी हेल्प करेगा. इसके बाद देन कम टू दिस 7-page स्टोरी, 10-page स्टोरी स्ट्रक्चर. Do you also prefer to do a beat sheet? आप beat sheet बनाते हो? In later stages, yes. The first stage is creating a story out of Creating it. a Bible. Let's call it a of Bible. course. Creating So a Bible. that is a technical process. First create a story, then try to understand the story in terms of act structure. What is the act structure of that? Then of course developing a broader story which we call as treatment. The story as it runs in film, which is called as treatment. So मतलब कहानी तो कहानी होती है, पर जैसे ओपनिंग सीन से आगे को कहानी. Yeah. So yeah. First write the treatment. The story के बाद treatment लिखता हूँ. Treatment लिखने के बाद then I come to beat sheet. Then is the beat sheet. Now identifying all the beats, all the important major beats, and writing them down. So when you are writing the beat sheet, do you always have your end fix, or do you write with open ending की देख लेंगे जो होगा वो? See, कहानी पे ज्यादा समय बिताने से बेनिफिट ये होता है कि यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट वेयर इट इज गोइंग टू इन अ वे गो अल्टीमेटली. You just don't know the scene, okay, but what मतलब that's why I give importance to spend more time on the story, characterization. I should know why I am telling this story, because ends, all the story का end क्या होता है? End is the very important part कि why this writer is telling this story. कोई भी कहानी देख लो, हम बोलते हैं कि मुझे ending नहीं, मतलब I am not clear, it's not clear in my mind, whatever. So I think why is not clear in our mind, because all the ends tell why this writer has written the story. All the ends come to that thematic thing. It's not just ending the story, or it's not just finishing that character arc. It should come together. Why you are telling this story with this plot, with this character together. It all comes together and towards a why. Story starts with who, when, where. How is the question which runs the story. And why is the question where the story amalgams and comes to an end. Wow, such beautifully put. Simplified version of the story. Really nice, really nice. काही स्टोरीज अशा असतात ज्यांचा एंड क्लिअर नसतो, म्हणजे मग ते असं म्हणजे असा अप्रोच असतो की ऑडियन्स तुम्हीच ठरवा की आता ह्याचा एंड ओपन एंडेड असतात. ओपन एंडेड असतात. नाही, पण मला असं वाटतं की ते ओपन एंड म्हणजे कसं आहे ना, मला पर्सनली खूप जास्त आवडतात ओपन एंडेड डेफिनाइट एंड पेक्षा. कारण अगेन मला असं वाटतं की ओपन एंडेड स्टोरी इज कॉमा, नॉट अ फुल स्टॉप. And it tells that the life of those character, or that the story doesn't know it. It says that it's just a pause, but the life will continue, and it's just a position where we just pause it and watch it like this is it. So this pause or a comma is very important, because it helps to us to reflect more. It makes the audience or the reader participatory. End is not given. It's not served on your platter. The comma invites you. And in a way, such kind of open-ended, open ends, the audience become the part of story. Yeah. Because we think, think why, what does it mean? Why here? Why it has stopped here? It's not a definite end. Why they stopped on a comma? And we just try to understand more and more. Definite end का problem ये है कि it becomes predictable. उसका एक पैटर्न बन जाता है, उसका एक फॉर्मूला बन जाता है, फिर सब वही फॉलो करते हैं, फिर ऑडियंस को भी कोई सरप्राइज क्यूरियोसिटी नहीं रहता है विद द कैरेक्टर्स. सो दिस सरप्राइज एलिमेंट ऑफ विद द न्यूनेस विद द एंड. क्योंकि आता म्हणजे आपण बघतो ना, आता लगान आपण बघतो तर आपल्याला माहितीच आहे ना आता काय, आता क्रिकेट मॅच येतात, आता हे जिंकणार होतं ना, भुवन आपला हिरो आहे, तर मग का बघतो आपण लगान? एक तर ते आपण हाऊ साठी बघतो की ओके अल्टिमेटली मतलब हाऊ इट इज गोइंग टू हॅपन. आणि स्टील देन वाय द त्याच्या कोरला जेव्हा ते पोचतो, एंड लगानचं काही पण असू शकलं असतं ना, पण एंड लगानचा मॅच जिंकण्याच्या पलीकडे ते सगळे
एकत्र येणं जे आहे, right. इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर डिफरन्सेस, दे कम टुगेदर. हा आहे त्याचा थीम, त्याच्या Right, right. व्हायच्या कोरशी पोहोचतो तो, की अल्टिमेटली थ्रू द मॅच द विलेज युनाइट्स, आणि त्यांच्यातलं जे युनिटी पासून त्यांना रोखणाऱ्या ज्या त्यांच्यामध्येच भेदभाव होते ते गळून पडले जातात. सो हे मी त्याला ते सांगतो की आता आपण ना असं आयडेंटिफाय करत नाही स्ट्रक्चर स्टोरीचं. आपल्याला कसं वाटतं की लगान, हा मग ती मॅच जिंकली मग संपली गोष्ट. तिथे नाही संपली ती गोष्ट, ती पूर्ण भुवनचा कमिंग ऑफ एज आर्क आहे. तो असा नाहीये कमिंग ऑफ एज आर्क आहे, तो असा एक पोरगा आहे ज्याच्याकडून कोणालाच काही अपेक्षा नाही. तुम्ही सुरुवातीचे सीन्स बघा, हिरो इमर्ज होतो, नो वन इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ हिम. आधीपासून नाहीये की हा आता आमिर खानला कास्ट केले तर मग हाच आहे बाबा. रादर तो उभा राहून म्हणतो की नाही मी खेळतो मॅच, तर सगळे गावकरी त्याला म्हणतात की अरे हा मूर्ख आहे का, तुला तुला सांगितलं, अरे तुला कळतं का. तर ह्याच्यामुळे तो माणूस बनतो. बरोबर, त्याची जर्नी. हा एक्झॅक्टली. आणि मग आपण ते बघत जातो. आपल्याला बघताना आपल्याला काय असं वाटतं ना की आपण ना त्याच्या. सो बेसिकली आय ॲडवाइज टू रीड स्क्रीन प्लेस एंड वॉच इट अगेन एंड अगेन. मतलब रीड भी करो स्क्रीन प्लेस तो आपको समझ में आता है कि नुआंसेस. वॉट एवर फिल्म यू हैव लाइक्ड, वॉट एवर सीरीज यू हैव लाइक्ड, यू शुड रीड इट द स्क्रीन प्लेस. फिर आपको पूरा अलग अलग इसमें जो सेल्स बिल्ड किए हैं तो वो आपको समझ में आएंगे. मतलब यू विल गेट टू दैट सेल स्ट्रक्चर, वो जैसे बोलते हैं ना साइंस की लैंग्वेज में कि आपको बाहर से तो मेरी बॉडी दिख रही है पर ऑर्गन स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर. सो यू विल गो देयर एंड जस्ट वॉच अ फिल्म इन दैट कॉन्टेक्स्ट की लाइक अभी मैं ना खाली ना सबप्लॉट ही फॉलो करूंगा. आपकी कोई भी फेवरेट फिल्म है ना, आपको लगता है कि यार ये ऐसी फिल्म मुझे बना दी, यार व्हाट इज दिस, ये कमाल है, ये गॉडफादर, ये तो ऐसी फिल्म ही नहीं बनी है. तो अगेन जस्ट वॉच गॉडफादर फॉर द कैरेक्टर ऑफ एनी अदर सेकेंडरी कैरेक्टर, मे बी ब्रदर और मे बी समवन हु इज नॉट पार्ट ऑफ फैमिली. खाली उसके लिए देखो, खाली कि वो मतलब अगेन मतलब अलग अलग कैरेक्टर के लिए देखो, खाली वो ही फॉलो करो. कभी खाली डायलॉग ही फॉलो करो, कभी बाकी कुछ फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट कैरेक्टर कुछ नहीं है, आप खाली स्ट्रक्चर फॉलो करो कि व्हाट वाज द ओपनिंग सीन, व्हाट इज द क्लोजिंग सीन, वेयर डज द फर्स्ट एक्ट एंड, वेयर डज द सेकंड एक्ट बिगिन, डज इट हैज अ थर्ड एक्ट, what is the ending scene, why it is that way. So even I am not trained writer in terms of like, yes I have done my graduation in theater जहाँ पे मैं थिएटर का राइटिंग सीखा हूँ, पर मैंने फिल्म का राइटिंग ऐसे ही सीखा है कि जो भी पसंद आए फिल्म तो देखो, बार बार देखो और बार बार जानो उसके, वो जो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि उसके बोन स्ट्रक्चर तक पहुंचो. आपको बाहर से पसंद आया है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर पसंद आया है, उसका सब ब्यूटीफुल एस्पेक्ट पसंद आया है, but ultimately you just have to go deeper and deeper, dig deep into the skin of the film you have liked. So मतलब हमने स्टोरी लिख दिया, हमने स्क्रिप्टिंग कर दिया, हमने उसका बीट शीट कर दिया. So how do you decide the scenes? Like how do you write scenes? Like how do you know that this should be my first scene, this should be my interval scene, this should be my last scene? What is the process of writing a scene? So once I do the beat story, beat sheet, sorry, once I do the beat sheet, तो बीट शीट की प्रोसेस में ही शुरू हो जाता है ये कि सीन का सीक्वेंसेस ये आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाता है. अभी इसमें दो चीज़ें हैं कि आप जब स्क्रीन पे फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हो फिर से ना आपका कॉन्शियस छोड़ दो. मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये पूरा रॉ, पहले स्टोरी एक रॉ लिखो, फिर उसको शेप अप करो, फिर उसको ट्रीटमेंट पे लाओ, फिर उसको और टेक्निकल फेज में लाते हैं हम, जिसमें जहाँ पे हम बीट्स पे लाते हैं. अभी उसके बाद है ना फिर से ना पूरा क्राफ्ट छोड़ देना जरूरी है जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं. ओके, you just need to build it and you just need to leave it. So I write the first draft in the same random like in a very open manner. एक सीन 10 पन्ने का हो रहा है तो होने दो, चलने दो, मतलब आपको नहीं लग रहा है, यू आर नॉट फीलिंग टू गेट आउट ऑफ दैट सीन. एक सीन आपको लगा कि यार 2 डायलॉग कैसा है, ठीक हूँ, इसमें ही खत्म हो रहा है और ये सही लग रहा है. मतलब यू जस्ट हैव टू बी वेरी अवेयर व्हाट अगेन द स्टोरी इज टेलिंग टू यू वाइल राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट. सो फर्स्ट ड्राफ्ट और बेसिकली बर्बाद होने के लिए होता है, ये बात समझ ले. फर्स्ट ड्राफ्ट भगवान के लिए नाम पे छोड़ दो, बस यही होता है.
एंड फर्स्ट ड्राफ्ट ना बर्बादी होना चाहिए, मतलब व्हेरी फ्रँकली. मतलब फॉर न्यू रायटर्स आय टेल की आपण खूप अम्बिशियस असतो ना फर्स्ट ड्राफ्ट, अरे यार काय वगैरे, एवढा लोड नाही टाकायचा फर्स्ट ड्राफ्टवरती. त्याला जाऊ द्यायचं, त्याला असं ते रानटी उगतंय तसं वाढू द्यायचं त्याला, जसं पाहिजे तसं. आणि त्याचं काही माझं ओपनिंग सीन काय, कोण काय, आपण फायनल प्रोडक्टचा खूप विचार करतो सतत. ते नाही करायचं तिथे फर्स्ट ड्राफ्टमध्ये. आणि तुझ्याकडे तू जर बीटशीट बनली आहे तर ते कुठे असं हरवणार थोडी, कुंपणाच्या बाहेर नाही येणार ती. तू कुंपण आखून टाकलेली आहे त्याच्यामध्ये, तूच आखलंय. तर आता त्या कुंपणात खेळ तर खरं मस्त मनमोकळे पद्धतीने, तर ते खेळायचं फर्स्ट ड्राफ्टमध्ये. सो मी ते करतो, म्हणजे आय डू दॅट. आय प्ले अ लॉट विथ द फर्स्ट ड्राफ्ट अँड देन द फर्स्ट ड्राफ्ट विल अल्टिमेटली टेल यू की व्हॉट इज गोइंग टू बी द सीन स्ट्रक्चर ऑफ दॅट. अँड यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ दॅट एव्हरी सीन. Time, like you just need to spend time. You just need to understand the situation with all the perspective. We don't understand the scene की मतलब सीन मध्ये आपण भरपूर गोष्टी लक्षात घेत नाहीये. एकतर जसं मी म्हटलं की कैरेक्टर आ रहे हैं, वो सीन के लिए नहीं आ रहे, वो सीन हो रहा है क्योंकि वो एक जगह पे एक सिचुएशन में आ रहे हैं. वो सीन के लिए कैरेक्टर्स को मत लाओ, वो कैरेक्टर्स आएंगे वो सिचुएशन में और वो सीन ड्राइव करेंगे. मतलब डोंट फोर्स द सीन ऑन द कैरेक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक यू डोंट डिसाइड. Second thing is सीन को how can you, सीन राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट थिंग, जिसको हम मेजॉन सीन कहते हैं. मतलब व्हाट इज द मोन्टाज, व्हाई डू आई नीड इट, डू आई नीड इट. मतलब या फिर जैसे मोन्टाज होता है तो एक मस्त है. मोन्टाज इज अ वेरी लेजी थिंग बाय द वे. मतलब द राइटर्स यूज इट इन अ लेजी मैनर. Actually it's a lazy, you are just skipping the beats and you are just running tar and that's it. But actually if you are using it very smartly, use it, understand it. You just need to understand the scene कि ये scene यहाँ क्यों हो रहा है. We don't play with the scene. जैसा कि उदाहरणार्थ अभी I'll take a simple example. Like boy meets girl. What is the cliche? School, college. हाँ. These are the places. Garden. हाँ. कहाँ पे? Office. First क्या first लव एट फर्स्ट साइट. लव एट फर्स्ट साइट की सिचुएशंस बोलो. चलो हमने कहा कि एक बेसिक एक कहानी बनाते हैं कि लव स्टोरी बनानी है, तो क्या है, स्कूल में मिल गए, कॉलेज में तो वो तो है, कॉलेज में साथ में पढ़े, तो वो एज भी वो होता है. हाँ कॉलेज में अफेक्शन. दूसरा कहा गार्डन में मिले, गार्डन में. या तीसरा किसी की शादी में. हाँ शादी में. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट. मंदिर. मंदिर. हाँ एज यू मेंशन लाइक इन अ प्लेस ऑफ जॉब. ओके, अभी ये लिस्ट कितना हो गया, 10-12 हो गया. अभी इसमें से कुछ भी यूज नहीं करना है. दिस विल मेक युअर बॉय मीट्स गर्ल्स एक्सक्लुसिव्ह. काहीच सुचलं नाही तर मग वापरा याच्यातलं. बट हे आधी मन में जो पहला, हमारे टीचर है प्रवीण भोले, तो वो मुझे वो उन्होंने हमेशा सिखाया की मनात जी पहिली गोष्ट आली ना तर ती लगेच तिच्या प्रेमात नाही पडायचं. ती बाजूला ठेवायची. ते तुला सुचलंय ना, तो तुला मन में पहली आइडिया है, तो वो डोंट हॉप टू दैट, उसको साइड में रखो थोड़ा. दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं आठवीं कितनी आइडियाज आ रही है. यू नीड टू बिल्ड दिस राइटिंग मसल. दिस इज द राइटिंग मसल. 10, 15, 20, 25, 40. नाउ सी दैट यू हैव 40 ऑप्शंस. यू वुड हैव जस्ट बी वेरी हैप्पी ऑन योर फर्स्ट. डोंट गेट वेरी हैप्पी विथ योर फर्स्ट आइडिया. रिजेक्ट इट. Like keep it aside, not rejecting it. Keep it aside. If you fall to generate other ideas, you'll always have your first idea. Backup तो है. Backup है ना. जैसे मैंने कहा कि boy meets girl, तो boy meets girl मतलब यही करेंगे ना. पर boy meets girl ये 10 आइडिया जो हमने अभी बोली, तो वो छोड़ के कुछ आया, तो वो boy meet girl आपकी कहानी होगी. वो अलग उठ के ही दिखनी है. उठ के ही दिखनी है. Why doesn't a boy meets a girl in a funeral? And that will make it a very interesting situation, very unexpected situation. Just play with the unexpectedness and just break the stereotypes, break the cliches. First effort. Don't go for the cliches. जनरली रायटरचं कसं होतं आपल्याला की नाही हे असं करायचं असतं, मग ते तसं, मग ते नाही, नका करू, सोडा ते क्लिशेस. त्याच्यामुळे तुमची गोष्ट भारीच होणार आहे. कान सगळे टवकाणार आहेत, अरे ही गोष्ट नाही ऐकली कधी का, कारण यू आर जस्ट सेइंग नो टू ऑल दो स्टिरियोटाइप्स. की पहिला आहे ना मनातमध्ये विचार, तो बाजूला ठेवा. ओपनिंग सीन हां ओके आहे, सुचला एक चांगली गोष्ट आहे, एक सुचला आहे, बाजूला ठेवा. दुसरा सुचला, अरे वा खूपच चांगला लेखक आहे, बाजूला ठेव. तिसरा पण सुचला, ओपनिंग सीन, 10 ओपनिंग सीन सुचले, येस नाव सिट आणि सी.
आणि पुट द एलिमेंट्स. हा ओपनिंग सीन केला तर कसं वाटेल, तो ओपनिंग सीन करायला कसं वाटेल, हा कसं करेल. आणि हा वेळ मिळतोय ना तुम्हाला लिखाण करायला, म्हणजे तो जो आहे तो हे नाही केलं तर ते मग ही प्रोसेस सतत चालू ठेवायला लागते. म्हणजे आता मी फर्स्ट ड्राफ्ट केल्यानंतर सेकंड ड्राफ्ट जेव्हा करतो ना, मग हे सगळं झाल्यावर मग मी आता येतो की ओके, आता मला आय हॅव ऑल द एलिमेंट्स अगेन ऑन पेपर फॉर सीन रायटिंग. नाव आय एम गोइंग टू अरेंज देम अँड आय एम गोइंग टू चिझल देम इन अ डेफिनाइट डिरेक्शन. नाव माय डिरेक्शन इज व्हेरी क्लिअर नाव. When I do a first draft, then I understand what to chop, where to shape, where I need to work, which area I can get rid of, which area is lacking big time, and then identifying 10 scene लेके बैठो, 5 scene. Initially तो second draft I sit with just 2 scenes for a day. That's it. Just 2 scenes for a day. 2-3 scenes, 4 scenes, that's it. Don't like rush. Why? Where are you trying to rush? End. मतलब तो एंड ही दिखा दो, एंड ही लिखो, खत्म हो गया. 5 मिनट का फिल्म बना लो. मतलब एंड के लिए ही नहीं चल रहा है सब. राईट. तुम्ही आम्हाला सांगितलं तुम्ही स्टोरी कशी लिहिता, तुम्ही कॅरेक्टर्स कसे क्रिएट करता, मग तुम्ही बीटशीट करून स्क्रिप्टिंगच्या स्टेजवर जाता, मग सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, फोर्थ ड्राफ्ट, ऑब्व्हियसली तुम्ही ड्राफ्ट काम करता. डायलॉग रायटिंग याला कसं अप्रोच करता, कोणत्या स्टेजवर अप्रोच करता? सो एक तर मी पुन्हा ते सांगेल की डायलॉग, आय डोंट नो, इन आवर कंट्री एस्पेशली इन बॉलिवूड मूवीज there always has been a different writer for dialogue, and Yes. there has been like screenplay and dialogues, or there has been screenplay by so and so and dialogues by so and so. There's no problem in having another dialogue writer, but the understanding of dialogues has been screenplay and dialogue. First of all, dialogue is not a different part. It's a part of your screenplay. It's screenplay. Yes. Like as they use in West, they just say screenplay by. Yeah, that's it. And screenplay means dialogue ke saath, matlab. Right. Speaking of the dialogue, I believe that dialogue is not a Different extra part of writing a screenplay. Screenplay म्हणजेच डायलॉग. स्क्रीनप्ले मध्येच असावा. स्क्रीनप्ले अँड डायलॉग हा आपण जो पर्स्पेक्टिव्ह आपल्याकडे जो रूढ झालेला आहे, तर तो मला असं वाटतं की स्क्रीनप्ले मध्येच तुझा डायलॉग सुरू होतं रे. म्हणजे बिकॉज फर्स्ट ड्राफ्ट इट सेल्फ, यू सी द फर्स्ट ड्राफ्ट इट सेल्फ द कॅरेक्टर कन्वर्स विथ इच अदर. दे नीड टू टॉक विथ इच अदर. They need to, they are people, they will talk with each other, right? They will fight, quarrel, be affectionate, go silent. Going silent is also thinking about dialogues. It's not like writing dialogues is just not like always like people speaking, but the moments when people don't talk is also you're developing your understanding of dialogue. So I write my own dialogue, so it doesn't become a difficult thing for me because I am thinking about the characters, because dialogue starts with the time when characters comes to your mind. It starts from there. Nice. It will not start कि स्क्रीनप्ले लिख गए, अभी तो 3 ड्राफ्ट हो गए, अभी डायलॉग लिखो. ऐसा कभी नहीं होगा. आप कैरेक्टर लिखते हैं ना, तभी से ही आपको पता है कि वो कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, वो कब बोलेगा, वो कब नहीं बोलेगा, वो कितना बोलेगा, वो किससे किस तरह बोलेगा. मतलब पर्सन टू पर्सन ऑल्सो आर लैंग्वेज डिफरेंस, द वे वी टॉक डिफर्स. वो किस सिचुएशन में कैसे बोलेगा. So this is all the characters. So I think for dialogues we need to understand again the characters, because dialogue is the only part where my characters speak. Verbally. Yeah, they speak their mind out. They speak out their emotion. So dialogue is not something which is a extra part of screenplay. It is actually part of the characterization. And if you going to have any other dialogue writer, he should understand the characters very well. Right, true. Very, very well. Yes. He should understand why the character is behaving so and so in this scene and not behaving so and so in the another scene. Or at this point in the opening, he was such kind of person and he was behaving in the same situation in this manner. And now in the second act, the same situation is there, but he's not behaving in the same manner. Why? Now the character has changed within the story. So
एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द कैरेक्टर्स. ऐसा नहीं कि खाली प्रोटोगोनिस्ट को समझ लिया तो फिर लगता है कि प्रोटोगोनिस्ट के डायलॉग अच्छे बनाते हैं, मतलब बाकी. सो वो जो, और दूसरी बात है ना, डायलॉग को वो डायलॉग बाजी कर देते हैं ना, वो एक चीज है कि डायलॉग बाजी मत करो उसको. स्टे ट्रू टू द कैरेक्टर. हाँ, वो बंदा क्या बोलेगा तो फिर वो ये करो, डायलॉग बाजी मत करो. मतलब तो वो डायलॉग बाजी अपने यहाँ पे ना, डायलॉग है ना, क्या डायलॉग मारा है वगैरह, वो मारने के लिए है क्या, वो पत्थर है क्या? मतलब उसको डायलॉग मारने के लिए डायलॉग मत लिखिए. डायलॉग इंप्रेसिव बनेंगे. मतलब आई विल गिव हिम एन ऑफर, ही वोंट रिफ्यूज. गॉडफादर का डायलॉग जो है, या फिर मुंबई का किंग कौन, भिखू मात्रे. आज आपको लगता है एज एन ऑडियंस वो डायलॉग है, पर ये मुंबई का किंग कौन, भिखू मात्रे, ये ना भिखू मात्रे ही बोल सकता है. सत्या वहां पे खड़ा रह के नहीं बोलेगा. अगर वो किंग भी हो गया मुंबई का और वो गैंग में बड़ा भी बन गया तो सत्या नाही बोलेगा, ये भिखू मात्रे ही बोलेगा. आपल्याला ते आवडतं की काय डायलॉग आहे, चायला कसला भारी वगैरे, पण ते लिहिताना लेखकांनी, चांगल्या लेखकांनी तो तोच म्हणेल ते डायलॉग. सो दैट इज द वे द डायरेक्ट कैरेक्टर से आप तोड़ देंगे डायलॉग. और फिर डायलॉग सीन के लिए लिखते हो आप. सीन के लिए क्यों लिख रहे? सीन के लिए मत लिखो डायलॉग, कैरेक्टर के लिए लिखो. नाही, पण मग अशी पण सिच्युएशन येऊ शकते की स्क्रीन प्ले तुमचा आहे आणि प्रोड्युसर्सने किंवा कोणी असं ठरवलं असेल की डायलॉग रायटर वेगळा असेल, मग त्यावेळेला काय कम्युनिकेशन व्हायला पाहिजे दोघांमध्ये? मी जर स्क्रीन प्ले रायटर असेल आणि सपोज तू जर डायलॉग रायटर आणि प्रोड्युसरने वगैरे ठरवलं नाही, कधी कधी असं असतं, पण यू वर्क इन टीम्स, एस्पेशली इन लॉंग फॉर्मॅट्स यू वर्क इन टीम्स. सो त्यावेळेस ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिट टुगेदर अँड अंडरस्टँड, लाईक वी वुड नीड टू सिट टुगेदर अँड अंडरस्टँड की फ्रॉम वेअर इट केम फ्रॉम ऑल. ही गोष्ट कुठून आली, ह्या गोष्टीतून ते सगळं हू, हाऊ, वाय सगळं तुला क्लिअर पाहिजे. सगळं तुला क्लिअर पाहिजे. तुला जितकेही प्रश्न असतील त्या गोष्टीबद्दल, त्याची सगळ्याची उत्तरं माझ्याकडे पाहिजे, किंवा नसतील उत्तरं तर मला म्हणायला पाहिजे की मला नाही माहिती उत्तर, किंवा जे काही, पण आपलं असं एक पूर्ण तू त्याचं पार्ट झाली पाहिजे. तू त्याचा पार्ट झाल्यानंतर तू कॅरेक्टर्स पूर्ण ओन करायला पाहिजे. नवीन डायलॉग रायटर जर त्याने कॅरेक्टर्स पूर्ण ओन करायला, ओन म्हणजे त्याचं, म्हणजे त्याची मैत्री झाली पाहिजे सगळ्या कॅरेक्टर सोबत, जशी स्क्रीन प्ले रायटरची. अडॉप्शन बेबी, तुमचं बेबी इने अडॉप्ट केलंय तसं. आणि त्याच्यानंतर देन यू स्टार्ट रायटिंग डायलॉग आणि देन यू डिसाइड. बट ना फ्रँकली ना, डायलॉग आय थिंक इन स्क्रीन प्ले द डायलॉग प्रोसेस, सो ideally what I do, on couple of project I'm working on, like I'm having a different dialogue writer. Okay, so I make a point that dialogue writer stays in the process from the beat sheet or from very early story building stage itself, just stays, and dialogue writer in a way contributes कि ये सीन में ये ऐसा बोलेगा, नहीं ये यहाँ पे नहीं, ये नहीं बोल सकता, नहीं क्या बोल सकता है. So whatever, so basically dialogue writing is a very focused job. How often or how many times you rewrite your scripts before you show it to your feedback group? I write. I like every draft. For every draft I have 2 drafts actually. For every draft I have 2 drafts. That's the way I will see. Like I write it for myself. Okay. Then I said, like I direct myself. So then I give, writer in me gives the script before giving the script to director in me. The writer in me reads it again, then again works on that. Then the writer in me gives the script to the director in me, and he works on that, and then only I share someone else. So there's a 2 to 3 drafts at every draft stage. So yeah, and basically writing is about rewriting. That is very important thing. Very, very important thing. Ask any writer. Writing is about rewriting. How and when the writer in you gives the script to the director in you, and how and when the director in you gives the script to a producer. So see, I unless and until the writer and me and director and me, we feel that let's do it, till that point I generally don't pitch it, because I'm not a very confident person, very frankly. So whatever confidence I get from that conversation of dialogue, of that dialogue between the writer and director in me. And if both of them feel that yes, chalo, now we are ready, now we can serve it, now it's cooked, then and only then I can offer to serve you. That's it. Like if it's not cooked or I'm not sure, I don't want to be unsure, very frankly. And if I'm unsure,
I don't come across as very confident person. So do you send it or do you narrate it? Do you take an appointment and I prefer to share just logline synopsis, and I just press on narrating it. The entire because I'm a trained actor, I feel it like I just like to read it. Reading is a very interesting thing. Not narrate, I just like to read. But depends, if someone is like not a listener and good reader, so someone can ask like so you read means you read from opening scene, the first scene to the last scene. Yes, you just read it out. Okay. So Read there is no like build up of इस scene में यहाँ से entry वहाँ से नहीं, ये कोई improvisation नहीं. मतलब improvisation करने की जरूरत पड़ रही है आपको तो जाओ घर पे और पहले स्क्रिप्ट लिखो. प्रोजेक्ट तो ऑन कर लोगे, मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे. प्रोजेक्ट ऑन हो जाता है, वो होता है ना इम्प्रेसिव पिच, ये मारा घुपाची है मारा, फिर ये इधर से वो आया, फिर वुश, वो नरेशन नहीं देता मैं एकदम सिंसियर स्टूडेंट हूँ. मैं लैपटॉप खोलता हूँ, सीन बाय सीन, इंटीरियर एक्सटीरियर, डे नाइट वगैरह सब, कट्टू वगैरह सब पढ़ के डायलॉग मैं आई रीड इट, आई रिहर्स इट. बिकॉज आई कम फ्रॉम थिएटर, आई रिहर्स इट. I rehearse the scene का description in a normal language. And then dialogues in that energy. Then I choose like simple variations for different characters. Because that is the way you should narrate it. Narrate मतलब वो नहीं है कि किस्सेबाजी नहीं. ॲस्पायरिंग रायटर्स आहेत ज्यांच्याकडे स्टोरी आहे आणि ज्यांच्याकडे स्क्रिप्ट रेडी आहे आणि त्यांना पिच डेक बनवायचा आहे, तर मग त्याच्यामध्ये म्हणजे डूज आणि डोंट्स काय असले पाहिजेत? बिकॉज सगळ्यांनाच माहीत नाही की पिच डेकमध्ये ॲक्च्युली काय असायला पाहिजे आणि काय नसायला पाहिजे. सो एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की वेन यू राईट अ लॉगलाईन अँड सिनॉप्सिस. सो लॉगलाईन म्हणजे काय असतं, एका ओळीत तुमची गोष्ट सांगा. तर लॉगलाईन आहे ना, काही आरटी नका लिहू, थेट लिहा, थेट. इट शुड कम टू द पॉइंट. And it should tell, logline should tell who is the character. कुणाची गोष्ट, who, what, when, where and how should be given in the logline. That's the best logline. Who, what, when, where, how. How in the shortest manner. Write logline and have a habit, not just for pitching. I write log lines again and again when I don't understand why I am telling this story or what is the most important part of the story. मी काम करतो याच्यावर, जेव्हा स्क्रीन प्लेचे ड्राफ्ट्स अँड स्टोरी जेव्हा कळत नाही ना आपलं काय कुठल्या दिशेने चालली, मी लॉगलाईनवर बसतो स्वतःसोबत. लॉगलाईन मलाच क्लॅरिटी खूप जास्त देते की काय आहे, काय नेमकं काय सांगायचंय मला, एका ओळीत मला नेमकं काय सांगायचंय नेमकं. मग ते नेमकं जे आहे ना प्रिसाईज, तो प्रिसिजन मग माझा कायम राहतो, मग माझा हालत नाही, मग भरकटत नाही. मला काय म्हणायचं आहे ते मला नेमकं माहिती पाहिजे. म्हणजे मला पेट पुराणमधून एवढं मला माहिती होतं की मला पेट पॅरेंटची गोष्टी सांगायची, मला क्यूट पेट मोमेंट्स नाही करायचे खरे. आणि मला अतुलाने आधी तिची गोष्ट सांगायची. त्यांचं एक आर्क आहे पेरेंटहूडचा, जे त्याला एम्ब्रेस करतात. खरं तर जे सुरुवातीला त्याच्यापासून एस्केप करणारे, तो डिनाय करणारे, ॲक्च्युली तो एम्ब्रेस करतात जस्ट विथ पेट्स. दॅट्स द पेट पुराण. माझ्यासाठी लॉगलाईन ही आहे, ही लॉगलाईन. मग या सिनॉप्सिसवरती, सिनॉप्सिस काय, तुमचा प्लॉट काय आणि स्टोरीची आउटलाईन काय, मग त्याच्यावर पुन्हा आणि लॉगलाईन सिनॉप्सिस चांगली जर केली ह्या पर्स्पेक्टिव्हनी तर मग तुमचं पिच चांगलंच होणार. सो बेसिकली लॉगलाईन सिनॉप्सिस खूप व्यवस्थित करायचं. दुसरी गोष्ट म्हणजे ना, एक रायटर्स नोट लिहायची. हे काय असतं? रायटर्स नोट इज बेसिकली वाय आय एम टेलिंग दिस स्टोरी, व्हॉट आय वॉन्ट टू से. रायटर नेवर गेट्स टू से दॅट ना. So, but for a producer, it is helpful. Even though he asks and doesn't ask, logline synopsis के साथ एक writer's note जोड़ो, writer one page, writer statement जिसको कहते हैं. So it's about like what is, म्हणजे तू ही गोष्ट का लिहितोय, तुला ही का लिहावीशी वाटली, ह्या गोष्टीतून तुला काय सांगायचंय, काय म्हणायचंय, तुला असं म्हणजे जे काही तुला लेखकाला या गोष्टीबद्दल काय म्हणायचंय. दॅट इज अ रायटर स्टेटमेंट. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज युअर कन्व्हिक्शन, व्हॉट इज युअर perspective, why is your story different? You have to just say it, and that will help. That will again give the confidence in you. If you are a new writer or if you are an old writer, whatever, it gives the confidence in you as a writer. It helps the producer to understand that you are enough clear, you are not confused, you have a very clear mind. Writer statement is very important. It gives the producers to confident. It gives him confidence कि यार
whatever it is, he has it clear in his mind. So writers, then of course, this is the first thing. Mug, then it's of course the screenplay or whatever. The pilot episode. Whatever. If it's a series structure, then develop a Bible entirely. Like develop a Bible episodic story, a pilot episode, a good pilot episode with dialogues and all. And that's it. But like pitch and make a pitch. Understand that what is your strength of pitching. व्हेरी इम्पॉर्टंट की स्ट्रेंथ म्हणून. असं उदाहरणार्थ आता जसं की मला ते नरेट करायला खूप आवडतं, कारण माझं थिएटरचं बॅकग्राऊंड असल्यामुळे मला ते हेल्प करतं, मला मजा येते. आय एन्जॉय इट. द ॲक्टर इन मी फील्स हॅपी बेसिकली. सो आय फील्स हॅपी ना की 4 जण ऐकतायत आणि मला ते नरेट करायला. बट इफ यू आर अ व्हेरी शाय पर्सन अँड इफ जस्ट गिव्ह इट टू रीड, डोंट पिच इट. स्ट्रेट ट्रू. देर इज नो थंब रूल अगेन विथ पिचिंग. यू कॅन सेंड द ऑडिओ ऑफ इट, द व्हॉइस नोट काइंड ऑफ थिंग. मेनी टाइम्स आपल्याकडे अवतीभोवती ॲक्टर मित्र असतात, नाटक बिटक करणारे वर्गमित्र. हे ते तुम्ही सांगा, अरे तू चांगलं वाचतोस यार, तुझा आवाज पण चांगला आहे, तू एक काम करतो, तू येशील का माझ्यासोबत पिचला. की मी त्यांना लॉगलाईन सिनॉप्सिस सांगेल, पण ते जेव्हा म्हणतील की नरेट तू नरेट कर. मग काय नरेट करायचं, त्याला सांगायचं की हे लिहिलंय 7 पानी, हे तू नरेट कर, फक्त हे वाचून नरेट कर. मग त्याची रिहर्सल करणं असं करतात. काही खूप जण तर असं करतात की फक्त वेगवेगळ्या 3-4 जणांना कास्ट करतात, व्हॉइस कास्ट, आणि त्याचं एक आता मोबाईल सगळ्यांकडे, त्याच्यावरती एक ऑडिओ रेकॉर्डिंग करतात. बेस्ट ऑफ 5 सीन्स दे हॅव, ऑर द ओपनिंग 5 सीन्स अँड क्लोजिंग 5 सीन्स. सो ना इच टाइम जस्ट प्ले. ते जे स्टँडर्ड्स आहेत ना, डोंट गो फॉर द स्टँडर्ड्स कि हे ऐसा होता है पिचिंग और ये सही गलत है ना. कोई भी आके आपको इस क्रिएटिव दुनिया में बोले कि ये सही ये गलत है, तो उसकी मत सुनो. जिस दिन आप सुनोगे कि ये सही और ये गलत है, आपकी क्रिएटिव प्रोसेस खत्म हो गई उस दिन. So there is nothing right or wrong in a creative process. There is nothing right or wrong. But I am telling this straight true to your voice. Don't go for the templates. That's what I am going to tell. And after all this, when do you start your next project? Like, when do you start with your next story? So sometimes what happens, you work on multiple stories parallelly. It doesn't happen consecutive or in a consecutive order. In terms of stories, I'm telling you. These stories come and go. I happen to write on and off at any point of time. Sometimes when I'm traveling, mainly when I'm at night, trying to sleep, I just type it on mobile. So here story process starts through and through, 365 days 24/7 in me and in any writer, I believe, because so story तो चलती रहती है. फिर आप जो बोल रहे कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जैसा डेफिनाइट काम जो होता है, सो ना मेरा इसका एक सिंपल फंडा है कि 2 से ऊपर हैट्स अगर आपको नचवाने हैं तो वो सर्कस बन जाती है. तो मैं एक बार 2 ही प्रोजेक्ट पे काम करता. आणि रिजेक्शन्स बद्दल तुम्ही काय बोलाल नवीन रायटर्सला? रिजेक्शन घ्यायचेच, काहीच नाही. त्यांनी काय येतच, रिजेक्शन येतच ना. आता प्रपोज करायचं, पोरगे नाही म्हणणारच आहे, मग काय करतो मग, म्हणजे काय करतो तू, सोडू नको ना. रिजेक्शन काय येणार, म्हणजे रिजेक्शन. आणि असं काही नाही, नवीन बिवीन नाही, लाईफ टाईम आयुष्यभर येतात रिजेक्शन. काही त्याच्यात काय करणार, मग नाही करायचं. तुला करायचं आहे का ते मॅटर करतंय. रिजेक्शन काय, तुला नाही करत, तू म्हणणार का नाही, तो नाही म्हटलं, मग आता मी नाही करत, मग नको करू. कोणाचा काही फरक नाही पडला या जगात, तू जर लिहिलं नाही तर. हे तुला समजायला पाहिजे. त्याच्यात ही ब्लँड रियालिटी रोमॅन्टिसिझम मधून बाहेरून नाही पडलंय. तू जर गोष्ट नाही लिहिली, तू जर फिल्म नाही केली, तर घंटा कोणाला काही फरक पडला नाही. फिल्म बनत राहणार, येत राहणार, लोक बघत राहणार. काहीच नाही. तुला करायचं आहे का, तू कर. मग पण सेल्फ डाऊटला कसं डील करायचं मग नवीन रायटर्सनी? सेल्फ डाऊट इज अ गुड थिंग, बाय द वे. इट विल ऑलवेज हेल्प यू ग्रो. Very frankly, seeing that self-doubt is good. Is my story really good? Nice. You will work more. You will always think that it should be good. You will feel that like last film तो 4 फेस्टिवल्स में गई और फिर ऑस्कर को भी गई और 500 करोड़ भी कमा लिया. उसके बाद सेल्फ डाउट आना जरूरी है कि मैं इतना भी बड़ा राइटर हूँ क्या. समझ गए. उसके बाद सेल्फ डाउट आना जरूरी है कि यार ये कहानी तो हो गई, अभी आगे वाली कहानी ऐसी बनेगी क्या. जस्ट डेवलप अ गुड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सेल्फ डाउट. इट्स अ गुड इमोशन.
it will help you improve always. It will never keep you happy, very satisfied. That's a good thing. That's a good thing. You keep growing and growing. You keep growing. You'll stay updated. You will be confident where you are confident. And you will not be confident just to show. You will be confident. The self-doubt is a best friend of a writer or like really good friend of any artist. It will keep your ego on check. सक्सेस मिल गया तो फिर सेल्फ डाउट खत्म हो जाता है, तो फिर सेल्फ डाउट को बोलते हैं कि चुप बैठो. सेल्फ डाउट को बात करने दो, स्टोरीज को बात करने दो, सेल्फ डाउट्स को बात करने दो, और तुम बस रीराइटिंग करते रहो. सो दैट इज व्हाट आई एम टेकिंग अवे विथ मी. Dnyanesh sir, thank you for your time. You have been very kind to give us your time and talk to us so candidly. आय एम शुअर की आमचे जे लिस्नर्स आहेत त्यांना पण आपली गोष्ट ऐकायला खूप आवडलं असेल. सो स्क्रिप्टनामा थ्रू मी तुम्हाला खूप 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 धन्यवाद करतो, आणि आय होप तुम्ही पण आमच्याशी बोलताना तुम्हाला पण तेवढंच चांगलं वाटलं असेल. येस येस, मला फार मजा आली. मस्त गप्पा मारायला तर मला आवडतातच, तर आणि गोष्टींबद्दल गप्पा मारायच्या तर फारच, म्हणजे द बेस्ट थिंग इज, मी जसं म्हटलं की रायटर, नो वन आस्क रायटर what do you think, what do you want to say, and that thing you are doing with your podcast is a very wonderful thing. And most importantly, we should just eradicate the myths around writing. Yes, there are a lot of myths around writing, and this your podcast is a very important thing for that. You are just unfolding those myths actually, or actually frankly this is a reality. Myths don't exist. सो त्यासाठी तुम्ही ते काम करता, ती सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे. आय एम ग्लॅड टू बी हिअर. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू सो मच. थँक्यू. Thank you for listening to our episode. We hope you enjoyed it and found some answers and insight. If you liked it, please subscribe the show and share it with your friends. You can also follow us on Instagram for regular updates. Details mentioned in the description. Thank you for your time.